वेलकम बैक नाज़रीन कराम। जो आपने हम वक्फे से पहले जो मैंने गुफ्तगू की थी, बहामास की एक इलाका है, वहाँ पर अमरीका चाइना बज़ात ख़ुद मौजूद है, उसके आदमी अड्डे के तौर पर हैं या किसी तौर पर भी हैं, लेकिन अमरीकन ये कहते हैं कि वहाँ बहामास पर जो है चीनी मौजूद है, और वो जो ज़ेर ज़मीन अमरीका तजर्बा करता है उसको वो देख रहे होते हैं। अब उनके पास ये सलाहियत हासिल हो चुकी है कि वो जो सबमरीन है उसको न सिर्फ वो तलाश कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसको तबाह कर सकते हैं। अगर ये उनके पास आ गया है तो ये एक बहुत बड़ी सलाहियत है जो उससे अमेरिका ने हासिल कर ली है, और आप दो उसका पता लगा कर उसको तबाह करना, इस तरह अमेरिका पर वो सबक हासिल कर लेगा, और ये बहुत बड़ी अमेरिका के लिए बड़े नुकसान की बात होगी। देखिए, आप जो वीडियो का लिंक जो हमने आपको बताया था वो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इसमें अगरचे इसका उर्दू का जो हिस्सा था वो हमने उर्दू में काफ़ी बयान कर दिया है, लेकिन फिर भी आप अंग्रेजी में उसको देख लीजिए। Faddis, you've got an amazing piece up on And Magazine. I know you're the founder and editor there, but this piece about the current Cuban missile crisis we've got 90 miles from our border is Dave Bratt right? Have they looked at the United States and say, hey, these guys don't have anybody's back, and they don't even have their own back? And right now, a dagger at the heart of America, the Chinese Communist Party are going to prove to the world that we cannot defend ourselves. Sam Faddis. Yeah, 100%. That's precisely where we are, right? We have been measured and evaluated and found wanting, and so now you got the Chinese negotiating an agreement with the Cubans, which we assume will be based on the template they've used multiple other places, which means they're going to establish a military base and bring in military personnel and put them 90 miles from Florida. And, look, they're not coming to train Cubans or hang out and get a tan. So you can look at what they have done elsewhere, and you can presume that this is the first step toward the deployment of offensive military weapons there, pointed directly at us. That's a second Cuban Missile Crisis. Worse, obviously, because we don't have JFK sitting in the White House to push back on this. So, Faddis, tell me, when you say the Chinese are putting a military base down there, I understand there are already Chinese personnel down there, PLA from the CCP. When you say it has offensive capabilities, walk me through what we can anticipate is going to be there. Right. Well, again, look, they're not coming there. What is their intent in coming there? It is obviously not that they have a pressing need to go train the Cuban military, right? What they're going to do is they're going to establish a facility. They're going to flow in Chinese personnel. From there, what can we expect? Well, let's start with missiles. Do I expect that that's the first thing that's going to land on the island? Obviously not. But you're alluding to the Cuban Missile Crisis. Technology has changed, right? If you're talking about Chinese missiles and the command and control mechanisms and all of that stuff, you can bring that stuff in 40-foot shipping containers on a commercial vessel, drive it to wherever, and have it operational in almost no time, okay? Hypersonic Chinese missiles, flight time, speed in excess of 7,000 miles an hour. You work that out. My math's not great, but that's about 2 minutes from Cuba to Miami, maybe 20 minutes to New York, D.C. This changes everything. Anybody who thinks we have the capacity to intercept that, stop that, forget about it. And we're talking not just conventional warheads, but we know that the Chinese are working overtime on putting nuclear warheads on those things. What about cyber, offensive cyber, and with AI? And what about a mini Wuhan labs, biological and chemical? They got chemical through fentanyl. They've got biological through the coronavirus and others they're working on, which we now know from Turner won't turn over the report, but we know it came from the Wuhan lab as a biolab, and offensive cyber, sir. Yeah, all of that. Make a list of all the horrible things in the world. Yes, biological, why not? We've already experienced COVID. We are being attacked, the equivalent of a WMD attack by the Chinese every day with fentanyl. Keep in mind, I think people really ought to focus on this. Look, 4 years ago, COVID crawled out of a Wuhan lab or was released from a lab. But in one way or the other, it came out of a lab that should have been at the top of our priority list in terms of collection, right? Biological warfare program, make a virus more dangerous to human beings, our number one global enemy. Nothing trumps that. That's literally what they call in the intel community tier 0 collection requirement. We received from our intelligence community no warning, and then when it began to happen and the Chinese scrambled to contain it, we received no notice of that. It was invisible to us.
4 years later, our intelligence community, when you ask them, how did the pandemic start? If you read the assessment and cut through the double talk, it says, we still don't know. We have no information. We have no intel. So if you think the Chinese are going to begin to come into Cuba and we're somehow going to monitor them moment by moment and know precisely when they've got what there, I mean, you're living in la la land. That's not where we are. Our collection capacity. वीडियो आपने देखी. अब इसके बाद में मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि बहामास का मैंने जिक्र किया. चीनी वहाँ से कूद के आ रहे हैं. एक केमिकल जो है के ज़रिए से अमेरिका के अंदर वो अमवात कर रहा है, जो बकौल अमेरिकियों के, हम नहीं कह रहे हैं या चीनी नहीं कह रहे हैं या मैक्सिको वाले नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि ये काम वो कर रहा है. चौथी बात उन्होंने कही है कि लातीनी अमेरिका में जो है वो चीन अपने असर रसूख बढ़ा रहा है, डे बाई छोटे छोटे ममालिक से दोस्ती कर रहा है, वहाँ पर अपना सामान भेजा रहा है, और सारी सूरत हाल यही है. उन्होंने कहा है कि अब जब रूस ने क्यूबा में मिसाइल लगाने की कोशिश की है, ये 1900 मैंने जो एक सूरत हाल है उस सूरत हाल से मुताबिक रखती है. अब इसमें बातचीत करने की या गुफ्तगू करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है. अगर ऐसा हो गया तो दुश्मन मुल्क के पास 90 किलोमीटर का सिर्फ फासला रह जाएगा हमारी मेन सरजमीन से. तो अब मैं सवाल ये करता हूँ कि भाई आप फिर अगर यही बात आपके लिए मुश्किल है तो फिर आप ये काम यूक्रेन में क्यों कर रहे हो? यूक्रेन पे रशिया का यही मौक़िफ़ है कि आप यूक्रेन में अगर आप अड्डे लगा दोगे तो 2 मिनट में उसको मास्को में आपका मिसाइल पहुँच जाएगा. अगर ये बात है तो फिर आप भी रुकें और वहाँ भी रोकें. तो उन्होंने कहा कि आप इस वक्त हमें ये कहने की ज़रूरत है, जॉन एफ कैनेडी का जो फार्मूला था वो ये था कि अब नहीं तो कुछ भी नहीं, और इसी बात होना चाहिए. जो कुछ भी होगा इसमें इस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं, ना इस पर हम किसी को मौका दे सकते हैं. हमें सिर्फ अब 72 घंटे का, अमरीकी दानिश्वरों को ये कहना है कि सिर्फ 72 घंटे का नोटिस दिया जाए चाइना को. अगर वो नहीं दौड़ता है तो उसके मुताबिक जो है जो भी हमें कार्रवाई करनी है वो फौरी कार्रवाई करें. और ये जो क्यूबा का जो मिसाइल लगाने का उनकी फ़िक्र है या उनका इरादा है या उनका अज़्म है, उसको ब्रेक करें, वरना तो ये यानी मेन लैंड जो है अमेरिका को ख़तरा लायक हो जाएगा और वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इसके बाद नाज़रीन किराम इजाज़त लेते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.